So hello guys, our today's problem is write a C program to print series 1 plus 3 plus 5 up to n. It means we have to print only sum of odd numbers. So let's start. Hash include studio dot h int main int n I and s. Now let s is equal to 0. Now we take print value from the user, enter the value of n. Okay, then we write scanf percentage d comma n, here ampersand also. Now we write for I equal to 1 and I is less than equal to n and I is equal to I plus 2. Now we write here printf percentage d comma I. We can also show it in different lines, so we can write here slash n. Okay, now here we do s is equal to s plus I. सो ये हमारे पास जो सा है प्रिंट एफ क्या करेगा, हमारे पास हर एक लाइन को अलग अलग लेके करेगा। जैसे पहले शो करेगा 1, फिर शो करेगा 3, फिर शो करेगा 5, ऐसे करेगा। अब हम आखिरी में करेंगे प्रिंट एफ, पहले अपना करेंगे स्लैश एन सम ऑफ द सीरीज equal to percentage d comma s, and here we do return 0. So now let's run it. So here we enter 16. So see here, it's give us value 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. इट मीन्स दैट इसने हमें 0 से लेके 16 के बीच में जितने भी हमारे पास और डिजिट आते हैं उसने हमारे पास सबको प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास इसने उन सब डिजिट का हमको सम करके दे दिया जो कि आता है 64. So guys, thank you for watching the video.